फाइल जो है ना तुम्हारा ये वाला मैरी ftp लॉगिन डॉट टी, ये फाइल से जो इनक्रिप्टेड जो इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं, इस फाइल को ओपन करने से वही इनक्रिप्टेड जो फाइल है उसी में है एक्चुअली वो पासवर्ड के लिए वो इनक्रिप्ट किया हुआ फाइल। ये किसी को पता ना चले। जिसके पास की होगा, आई मीन जिसके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, वही उसको एक्सेस करेगा। डिक्रिप्शन यूजर नेम पासवर्ड, तो डिक्रिप्शन पासवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। तो वो तुम जो है ये जो बोल रहे हैं ना एक इंस्टॉल करने के लिए CSC लैब VM, उसमें इसको एक्सेस करोगे, ये कोड डालोगे तो ये तुम्हारा डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो डिक्रिप्ट करने के बाद तुम्हारा मिला है यूजर नेम पासवर्ड, तुम लोग यूज कर सकते हो। अभी अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दो। यूजर नेम की जगह पर मैरी डाल देना और पासवर्ड में एंटर कर देना Cisco 321। ये मिलेगा कब, जब डिक्रिप्ट करोगे ये इंफॉर्मेशन। तो ये अलग एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है जो कि तुम वर्चुअल बॉक्स में चला सकते हो इसको, या Sir, what I VMware। understand is, Sir, what I understand is we just need a simply एक कोई भी Linux का environment so that ये जो command से ये चल सकता है. So I think हम्म it can work with any Linux का Kali Linux हो या फिर Ubuntu हो, it can work with it. So कुछ सर कर सकते प्रॉब्लम हो। नहीं, कोई भी VM में डालने से वो चलेगा. हमको तो बस हाँ, पासवर्ड निकलना है, तो वो आ यस रहा है. यस यस, डिक्रिप्ट करना है तुमको। एट द एंड यू हैव टू डिक्रिप्ट Yes, द फाइल। और जब डिक्रिप्ट कर yes. दोगे तो तुम्हारा पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे अगर मान लो तुम्हारे पास लिनक्स का तुम लोग का भी कुछ है क्या तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह? WSL से चेक करिए ना, WSL होगा। मेरे पास तो काली लिनक्स हुआ है, उसमें हो जाना चाहिए। एक बार चेक करते हैं, जस्ट ये वेट। सर काली लिनक्स में ट्राई किया था, हो गया था उसमें। हम्म देखो मैं तुम लोग को एक है रिसोर्सेस को बताता हूँ, जस्ट वेट। आई हैड इंस्टॉल्ड। ये ऑनलाइन सिस्टम में ट्राई कर सकता हूँ ना। तुम्हारे पास वर्चुअल बॉक्स है, तुम लोग पास, सबके पास आई थिंक होगा, राइट? डू हैव वर्चुअल बॉक्स ऑल ऑफ यू? सर यस डब्ल्यू सर। है उबुंटू का WSL। हाँ, तो उबंटू भी यूज कर सकते हैं। नहीं सर, WSL पूछना हो, अगर WSL है तो उसका डायरेक्ट टर्मिनल से हम लोग यूज कर सकते हैं। हाँ, WSL मेरे पास तो नहीं है। तुम लोग के पास है तो तुम यूज कर सकते सर हो। वर्चुअल बॉक्स है। वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स या लिनक्स है क्या ऑपरेटिंग सिस्टम, चेक करो। नहीं सर, नहीं। वो क्लाउड ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या? जो लोग क्लाउड ट्रेनिंग कर रहे हैं वो लोग इसमें लेकिन वो फिर एक्सेस नहीं देगा। वो तो प्री डिफाइंड लैब है। तो तुम लोग फ्री टेर अकाउंट नहीं क्रिएट सर, करके। इसका ऑनलाइन टूल भी आता है ना सर। हाँ, ऑनलाइन तो है। देखो कर पा रहे हो नहीं, ऑनलाइन ट्राई करो। ओपन सोर्स हाँ का सर, लिनक्स का ट्राई कोई करूँगा अगर सर। है तो वहाँ हो जाना चाहिए। कैन यू सी माई स्क्रीन? इज इट विजिबल गाइस? Yes, sir. तो पासवर्ड मैंने क्या डाला था, लेट मी चेक। दिस इज अ टर्मिनल, यू कैन गो टू इफ यू हैव काली लिनक्स। ये तुम लोग खुद ओपन सोर्स से डाउनलोड कर सकते हो, गूगल में है। अगर तुम लोग डालोगे ना काली लिनक्स या लिनक्स, ISO इमेज फाइल मिल जाएगा तुम लोग को।
देखो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे डाउनलोड करोगे। ये तुमको एथिकल हैकिंग के लिए भी यूज होता है। तो आज मैं तुम लोग को इसका भी सिखा देता हूँ, काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन वगैरह। वो आगे भी काम आएगा तुम। आई होप दोज वेर फ्रॉम यू नो आई मीन ऑल द किड स्टूडेंट विल बी हैविंग वर्चुअल बॉक्स, क्योंकि हमारा जो आईसीटी टीम है वो लोग वर्चुअल बॉक्स प्रोवाइड करते हैं जब लैपटॉप देते हैं। तो सबके पास वर्चुअल बॉक्स है, राइट? सबके पास है ना वर्चुअल बॉक्स? कोई है जिसके पास नहीं है वर्चुअल बॉक्स? am I audible guys? हाँ यस सर, ओरेकल है सर। हाँ, oracle वर्चुअल बॉक्स है, यस ठीक है। सर। तो ठीक है, एक काम करो तुम लोग, ये करो, गूगल में जाओ, गो टू ओपन योर गूगल एंड ओपन एनी ब्राउजर एंड जस्ट टाइप। अभी मैं तुम लोग को इंस्टॉलेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि बार बार आ रहा है यूज आ रहा है, हम लोग कितना स्किप करेंगे। ठीक है, उसको अभी हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पर टाइप करना, डाउनलोड सर्च करो काली लिनक्स पहले, काली लिनक्स। एवरीबॉडी जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस एंड पैरेलली डू इट। यहाँ जब तुम टाइप करोगे ना काली लिनक्स, तो एक आएगा डाउनलोड गेट काली करके, यहाँ पे देख रहे हो? ये देखो, ये वाला ऑप्शंस को क्लिक कर दो, राइट? चूज योर प्लेटफॉर्म। यहाँ तुम लोग जा सकते हो, इसको इंस्टॉल कर लो, काली लिनक्स 2025 x86। सर इसमें आज कुछ काम होगा क्या सर? एक इंस्टॉलर है यहाँ, ये डाल दो काली, पर्पल वाला डाल सकते हो या ब्लू वाला डाल सकते हो, रिकमेंडेड है। तो तुम्हारा ब्लू रिकमेंडेड है, पर्पल रिकमेंडेड है, कोई भी ले सकते हो। तो मेरे पास तो ब्लू वाला आई थिंक है। कौन सा वाला है, लेट मी चेक। हाँ ब्लू वाला है, हाँ, लिखा है ना काली लिनक्स ब्लू, देख रहे हो? तो ये अलग अलग है अपना, उनका ये है प्रोसेसर वगैरह डिफरेंट होगा। आई मीन वही x86 ही रहता है जनरली, x86 64 बिट प्रोसेसर। तो ब्लू ले सकते हो, सर रिकमेंडेड है। कौन सा या डाउनलोड करना होगा तो? या पर्पल का बता रहा स्क्रीन दिख रहा है ना तुम लोग को? कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर, यस सर। देखो स्क्रॉल करके नीचे जाना, जस्ट स्क्रॉल डाउन, so you have the purple one, can you see here? There is some installer, if you go bottom of that, देखो एक है ब्लू वाला है, और नीचे जाओगे तो पर्पल वाला मिलेगा। हाँ, तो कोई भी देखो, ये भी रिकमेंडेड है, ब्लू वाला भी रिकमेंडेड है, ये वाला भी रिकमेंडेड है। तो इसको जो है इस पर क्लिक कर दो, इस पर क्लिक कर दो। ब्लू और पर्पल में क्या डिफरेंस है फिर? चलिए, कुछ खास डिफरेंस नहीं रहता है, वो अपना अपना अलग अलग अपडेटेड जो है तुम्हारा आईएसओ इमेज फाइल लोग डाल के रखे हैं। खास डिफरेंसेस कुछ है नहीं, पर्पल या ब्लू कोई भी यूज कर सकते हो। पहले वो तो सर ब्लू ही चलता था, पर्पल नया ऑप्शन देख रहा हूँ। वो अलग अलग वर्जन्स हैं, उसका अपडेट किया है। तुम लोग चेक करो तो हो रहा है इंस्टॉल, एक बार यस सर, क्लिक करके डाउनलोड देखो। यस सर, 4.2 डाउनलोड जीबी का स्टार्ट हो है। गया है। 4.2 GB। हाँ वो थोड़ा ज्यादा है, सर मतलब उसका इसमें फाइल। आज कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होगा क्या सर? क्या सर इसमें क्या बोल कुछ रहा है? काम होगा क्या सर खाली में अभी? हाँ, नहीं नहीं, काम है, इसको कर लो, ये आगे बहुत काम आएगा। नहीं नहीं, आज इसलिए पूछ रहा, चलिए मेरा ड्यूल बूट सिस्टम है ना, तो नहीं तो तब मैं चेंज कर दूंगा, इसीलिए पूछ रहा सर हूँ। टोरेंट पे क्लिक करना था, ड्यूल बूट किया डायरेक्ट हुआ जो है, मेरा ऑलरेडी है। 4.1 GB का लिख रहा है उस पे। तुम लोग एक काम करो, अगर नहीं अभी कर पा रहे हो, अगर ये तो 4 पॉइंट समथिंग रिक्वायरमेंट है जीबी का, 4.12 ऐसे कुछ होगा, चेक करो। तो अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम लोग जो है, ऐसे जो भी आईएसओ होगा वो लगभग 2 जीबी से तो ज़्यादा ही का रहेगा, तो भी रहेगा 3-4 जीबी का ही होता है वो लोग का। तो आप बाद में भी डाउनलोड तो करना ही पड़ेगा। देखो तुम्हारा वाईफाई वगैरह है तो कर सकते हैं, नहीं तो पर्सनल हॉटस्पॉट है तो डाटा सब चला जाएगा, 4 जीबी ले जाएगा यही। तो उसके हिसाब से देख लो तुम लोग, कोई भी यूज कर सकता है, पर्पल या ब्लू जो भी है सर उसको डाउनलोड कर। WSL पे अभी हम लोग डिस्क्रिप्ट कर पा रहे हैं मैसेज को? हाँ वो भी। एनक्रिप्ट मैसेज WSL पे, तो WSL हम लोग सबके पास होगा ये।
WSL क्या बोल रहे तुम? किट लैपटॉप में सर WS WSL दे रखा है। इधर विंडोज सिस्टम। WSL ये वाला था। यस हाँ एक ये मिनट। उबंटू प्री इंस्टॉल्ड आता है। ये प्री इंस्टॉल्ड है, इसको हम लोग डिस्क्रिप्ट कर पाएंगे मैसेजेस को। ठीक है, इसमें तो हाँ कनेक्ट हो जाएगा, 1 मिनट लगा। हाँ बस। तुम्हारा तो इधर सी ड्राइव पे कनेक्ट कर सर रहा है। वो डाउन पावर प्लस के बगल में जो डाउन वाला है उस पे चेक करिएगा। डाउन एरो ये वाला। यस सर, उबुंटू कर सर लीजिए उसे सर। ऊपर करके पावर रखिए, से वो खुद ब खुला खुद। है। उबुंटू कर सर एक लीजिए सर। पावर से खुला, उसका पहले टैब स्विच कर लीजिए। हाँ हाँ बस यहाँ ये। पर सर ये चल जाएगा सारा। अच्छा, तो ये जो कमांड है, इसको एक मिनट तुम लोग इसको यहाँ इसमें पे जाओ, पेस्ट कर देंगे तो काम करेगा। पैकेट पैकेट ट्रेसर में जाओ। लेट्स सी, एक सर मिनट इसका रुको। काली लिनक्स का भी आता है WSL। हम्म। इसका पासवर्ड क्या है? मैरी FTP 321 बाय डिफॉल्ट या किट होगा। 123। बाय डिफॉल्ट किट है भाई। पूरा विंडो नहीं ओपन हो रहा। ओके, तुम लोग का जो है इसको लिखो। तुम लोग डायरेक्ट ये कोड डाले थे। यस सर, पूरा कॉपी यस कर सर। लीजिए। अगर पासवर्ड भी उसी के लास्ट में पासवर्ड ऐड कर दीजिए, एक बार में हो जाएगा काम। पासवर्ड तुम्हारा है ये वाला। डैश पास बोल के तो पासवर्ड ऐड कर दीजिए सर, वो कमांड के लास्ट पे। When you ask for this decryption password, use this, enter this to decrypt password. Okay, ठीक है, मैं इसको पहले चला कर देखता हूँ। Let's see. Yes. Down कर। Okay, let me check. कंट्रोल शिफ्ट वी सर। डायरेक्ट कॉपी नहीं हो रहा है क्या? हाँ आ गया ठीक है। Enter. What is asking? Okay, decrypt password. So password is our Mary 123. पासवर्ड ट्रेस कर सकते हैं। Let me type Mary 123. And decrypt. पासवर्ड गलत डालें सर। Okay, I'll try once again. तो वो कमांड पे भी डाल, सीधा कमांड पे डाल दीजिए ना सर पासवर्ड, एक बार में हो जाएगा। चैट कर दिया होगा। Password is Mary FTP 123. पेस्ट मत करिएगा सर, टाइप कर लीजिए, उससे बढ़िया। Mm-hmm. Yeah, that's great. And now we got that. This is the username is this. And password is इसको 321. ऐसे तुम लोग भी कर लो, तुम्हारे पास तो है ही ये टूल। तुम्हारा जो है WSL, इसको सर्च करके करो, तुम्हारे लैपटॉप में भी होगा। किट का ही मेरा भी लैपटॉप है, यू कैन यूज दैट। So after decrypting, we got that username this Mary and the password is Cisco321. That was required in this lab. See, they are asking this only. तो minimize कर दो। यही चीज वो लोग पूछ रहे हैं कि what is the username and password of Mary FTP account. So we got that username password once you have used that Ubuntu machine or Linux machine, and you can run this code. I mean, just simply the file which they have provided, this one, and this file you got it where under Mary FTP login.txt. तो यही मैसेज था वहाँ भी, पर मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। तुम लोग यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर में अगर जाओगे
Sorry, let me go to text editor and just open the file married.txt. ये फाइल अलग है तुम्हारा, ये इन लोगों ने दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसी को डिक्रिप्ट करने से हमारा मिल, ये ऊपर वाला फाइल था बट कमांड के साथ नीचे ये वाला भी चीज़ है एक ही साथ ऐड कर दिया। फाइल तुम्हारा ये वाला है, ऊपर वाला, यू कैन चेक दैट। ये वाला है, देखो। And along with that they have entered some command and to get that your decrypted informations. Okay, that's great. So we did it. Now we can move ahead with the next part, where they were asking to upload the credential data using FTP. So what you have to do it in this case, just you need to move to the laptop BR1, that is your Mary laptop, and just open text editor. So that just now I opened that. Just go to the text editor here and just go to the file. Open which file we have to open? Client.txt. So this file, just open it. Okay. So what is asking? Click the document client.txt and click OK. And what form is the data in? Which form the data is in, guys? Is it an encrypted form? All your data? Yes or no? What is your answer? They are asking, there is a question, guys. Answer me. What is your answer? What form is the data in? Encrypted. Encrypted form, right? Next thing is that you have to connect the BR server. Close this text editor. Now just go to the BR server. Here is BR server. This one is BR server, right? And BCPR1 BR server. Yeah. Right. This server जो है close the text editor, command prompt. Okay. Connect to BR server. Okay, there only we have to connect. ठीक है, उसी से कनेक्ट करोगे BR सर्वर को डायरेक्टली, मतलब तुम्हारा जो लैपटॉप BR है ना, उसी से कनेक्ट कर दो। तो यहीं पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाके ये वाला आईपी चला दो। ये आई मीन FTP सर्वर का जो आईपी 10.0.3. इसको चेक भी कर सकते हैं तुम लोग, FTP सर्वर जहाँ पे भी है ये कनेक्ट हो गया। You can enter the command to connect the BR server. Mary credential that you decrypted earlier to authenticate. अभी हम लोग ने डिक्रिप्ट किया था, तो यूजर नेम क्या था? मैरी था, और पासवर्ड क्या था? इसको 321, राइट? नाउ वी हैव लॉग इन टू द FTP सर्वर। ये पासवर्ड कहाँ से मिला मुझे? वो डिक्रिप्ट जो किए थे ना हम लोग WSL में, वहां से मिला था। तो ये मशीन तो मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, पावर ऑफ द मशीन। ओके, राइट। सर या दैट्स डन। या टेल मी। सर पासवर्ड क्या है? तो मैंने रॉन नहीं किया तो इस वजह से पूछ रही पासवर्ड 321, इसको 321, हूँ। Cisco 321. Yes. Now what you'll do, you have to upload the file to the FTP server. So you have to be at the FTP prompt, and you need to enter the command here to view the current file stored on the server. And then you can use the put command to upload the client info.enc file to the server. So very simple. We were at the if I go to FTP server, I'm at the FTP prompt, right? So here just write a command dir. So you can get that all the files and all the directories, and dir, I mean all the directories you get it from this IP 10.0.3.30, right? And where we have to verify the client info.enc file is now on the server. Enter the quick to end the FTP session. So let's check that this file is there.
We need to upload that file, sir, by using put command. I think I have to upload that. Yes, this one dir current file that is okay. I jumped to some other steps. That's why we are not getting that particular file. So before of that, I'm at the state number 3. Just look at here. We have to use a put command to upload the info.enc file. So just write the put और ये फाइल को एंटर कर दो. फाइल का नाम जो है client info.enc, राइट. अभी इसको चेक कर सकते हो. नाउ यू कैन टाइप dir and you can verify that file अभी है या नहीं. Now you can check that. तुम लोग को दिखा enc.enc, देखो हाँ यहाँ पे आ गया. देखो 29th step में. You can check that. So this one just we have uploaded this file on the FTP server. So if the threat actors were to capture the file transfer, what would be in clear text? तो अभी जो है तुम्हारे पास ये जो फाइल है client info.enc, ये तो अपलोड हो गए. Now just quit from this FTP server and type quit. Right. So now we are in our home machine. In the next part, like you have to discover the FTP account credential for the Bob. Okay, that is you need to Bob needs to access the content of the file Mary stored on the BR server. देखो ये फाइल ने मैरी ने स्टोर कर दिया था BR सर्वर के ऊपर, FTP सर्वर जो था. लेकिन अभी क्या करना है हमें. बॉब नीड्स टू एक्सेस दिस कंटेंट ऑफ द फाइल दैट मैरी ने स्टोर किया था. बॉब को अभी एक्सेस करना है टू वेरीफाई सम कस्टमर इंफॉर्मेशन लाइक मैरी. बॉब नीड्स टू डिक्रिप्ट दिस FTP लॉगिन इंफॉर्मेशन. बॉब को भी डिक्रिप्ट करना है FTP लॉगिन को इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू एक्सेस द BR सर्वर एंड डाउनलोड द फाइल, राइट. So you have to access the text document on the Bob's laptop. Where you get that? So that is your laptop BR2. Then we have to open the text editor. So let's move ahead with the Bob PC. Where is Bob the laptop BR2? This one is the Bob laptop. Go to the desktop. Open the text editor. Just go to the file and open the Bob FTP login.txt. Bob FTP login.txt. ये भी हमारा encrypted फाइल ही है. हमको लिनक्स वर्चुअल मशीन पर जाना पड़ेगा. लैब VM फाइल को ओपन करना है. तो फिर वैसे ही पहले जैसा ही है, कमांड चलाना पड़ेगा. लैपटॉप BR फाइल, क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट. ओके दैट्स फाइन. ये तो ठीक है, हमारा है सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे. अभी एक काम करो तुम लोग. Just for the decrypting, like how I did it for the Mary laptop, or similarly for the Bob, you have to open that Linux machine, and they're asking like to copy this text file, but they have given the command already here that you can use that, right? So if you use this command, username and password, everything they have given. Bob FTP 123 is your password. So let's copy this command of the decrypting file and open that your Ubuntu machine. Just paste it here. Hit enter. The password is Bob FTP. I think 123. Let me check. Yes, Bob FTP 123. So that we have to paste it. Bob FTP 123. Just type that password. So we got this account information of your FTP server. That is your Bob username and password ninja123. Right. So that we have to decrypt this information and then we'll get that. So these things you have to. When you ask for the decryption password, Bob FTP123, that we did it. And there is a question like, what is the username and password for Bob FTP account? तो अभी हमें मिला ना डिक्रिप्ट करने के बाद ये वाला जो है तुम लोग का Ubuntu मशीन जो यूज कर रहे हो उसके अंदर जो है
तुम लोग का एक अकाउंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिला है, यूजर नेम दैट इज योर बॉब एंड पासवर्ड वी रिट्रीव लाइक ninja123। ये आंसर यहाँ पे तुम्हें करना पड़ेगा। द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड लाइक what is the username and password for the Bob's FTP account। तो मैरी के FTP अकाउंट का हमारा मिला था यूजर नेम मैरी एंड पासवर्ड था Cisco123। और बॉब FTP अकाउंट का जो है उसके लिए बॉब आया है, पास यूजर नेम एंड पासवर्ड हो गया तुम्हारा ninja123। Now you can move to the fourth part where you have to download the confidential data using FTP. So in this part, you will download and decrypt the confidential data stored on VR server. So first of all, you have to connect this FTP server. All right. So you can be in the Bob laptop, and you can connect this Bob laptop to the FTP account. You know that how to connect. The simple command that you have to type FTP 10.0.0.3.30. So just close this text editor, go to the command prompt, type this command. So you are able to connect. Now here the username they're asking, FTP account username. What should be the username I should type? What is your answer? क्या username यहाँ type करना होगा बताओ? Bob. So I need to type Bob. Very good. What should be the password? Ninja123. So that you have to type. जो हमने डिक्रिप्ट किया था ना फाइल, वहाँ जो मिला था यूजर नेम और पासवर्ड, वही यहाँ पे एंटर करना होगा तुमको। बॉब था और ninja123, that was your password for this Bob FTP account, that you have to enter it here, right? That what we did. Now you can download that some file on this FTP server, right? So for this you can use the git command to download that client.info file from the server. ऑलरेडी हमने पहले सर्वर पे डाला था, FTP सर्वर पे किसके कौन सा यूजर से डाला था बताओ तो तुम लोग। हमने ये फाइल डाला था ना, अब हमें डाउनलोड करना है। सर्वर पे ये फाइल है या नहीं है बताओ। clientinfo.enc, will it be there in the FTP server? Yes or no? ये वाला फाइल Yes, है या sir. नहीं? देखो अगर dir टाइप करोगे ना तो वो फाइल तुम्हारा दिखा देगा 26 नंबर पे था। अभी हम लोगों ने ये फाइल को डाला था, किसी यूजर से डाला था बताओ, कौन सा यूजर ने डाला था इसको, टेल मी। Sub BR1. BR1 लैपटॉप BR1 किसका था वो? मैरी का था या बॉब का था? मैरी से था। मैरी। मैरी था, मैरी था। तो मैरी के अकाउंट से तुमने FTP सर्वर पे डाला था clientinfo.enc फाइल। तो अब इसीलिए हमने पहले पुट किया था, पुट मतलब उसके ऊपर सर्वर पे हमने इसको लोड कर दिया ये फाइल को। अभी हमको चाहिए सर्वर से डाउनलोड करना है, राइट? तो हमें गेट करना पड़ेगा अभी, राइट? तो गेट तुम लोग चला दो कमांड गेट और फाइल नेम डाल दो क्लाइंट, ये वाला फाइल डाल दो clientinfo.enc, राइट? हिट एंटर, जस्ट ट्रांसफर कंप्लीट हो गया। Now the next thing is that we have to verify that, right? Now go to where you have downloaded this file, किस में डाउनलोड किए हो तुम लोग? बॉब पीसी में, राइट? तो हमें बॉब पीसी के प्रॉम्प्ट में जाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से क्विट करते हैं FTP सेशन से। सो जस्ट राइट क्विट हियर एंड नाउ गो टू Bob PC and we are at the Bob PC prompt. Now we can type the dir and you can check that तुम्हारे पास है क्या clientinfo.enc फाइल, यहाँ देख सकते हो ये अवेलेबल है clientinfo.enc फाइल। now it is available on this Bob PC as well. Done. Now where it is asked for questions. If the threat actor were to capture the file transfer across the internet, and what would be in the clear text?
पर note now the Bob has the file. He needs to decrypt it so that he can read it. Earlier, Mary sent Bob an email key for the file and use the email program to retrieve the encryption key for this, our client info.enc file. So here it will go to email server. Just close this. Just you should be in the Bob laptop. Go to email server and you see the Mary and they have received a mail from the Mary@branch.com, and the Mary has sent decrypted key. You can see in the subject, and you email subject decrypted key and record the decryption key below. So hi Bob, the decryption key is Cisco 123. That is had been sent by the Mary. Right. This is your Cisco 123. That is your key, which we have got. Now we ask what is the decryption key access that confidential information of Android Police 5. ये डिक्रिप्शन की है तुम्हारा, उसने मेल करके बताया है उसको 123, right? Next, decrypt the content of the client info.enc file. Now close the email windows and the text editor. You can text editor, right? And here you'll see there is a client info. You can open it. Client enc. You can open this file. So these are the encrypted file we have, right? Write all the text in the client info file and copy it, and in CS we'll have VM, click the menu button and the text editor. So again you have to decrypt that. They're asking, just copy and paste that command and you can get that, all the credential and all if it is required. So simple, this command we can run, right? For the decrypting password, you can use Cisco, enter the decryption password, enter AES256 series of decryption password. Okay, so what I'll do, I will copy this file and just run this on your Linux machine. Let's hit enter. Can't open the client info for doing such files are okay. So what you can do, you can use that file which we got it now. On the terminal, enter ls command to verify the client info in this current directories. If not, navigate the directory for the client info is stored. Use the following command to decrypt the client info files. Okay, that file is not available ना, इसमें तो अवेलेबल नहीं है, तो हमें जो है पहले इस फाइल को डालना पड़ेगा. Just see, just go to the file, just open it, this file, just copy it है. फाइल बना के इसको ये कर दो और तुम लोग काम करो, इसमें एक कमांड रन कर दो. We require this file ना,
टच कमांड यूज कर सकता है। टच एंड द फाइल क्या है हमारा, फाइल का नाम डाल दो इसमें, keep a file with the name this। पहले एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देते हैं। Just check this file is there or not। ls डालो कमांड, इसमें दिखाएगा। हाँ, ये फाइल तो आ गया है तुम्हारा। अभी फाइल के अंदर हमें इंफॉर्मेशन पास करना है, वो वाला पेस्ट करना है। तो हाउ डू यू गो टू द फाइल? टेल मी, यू गाइस आर स्टडीइंग लिनक्स, कैसे एंटर करोगे फाइल में, बताओ। व्हाट इज द कमांड? cat something कैट क्या? कैट से हो जाएगा, विम से होगा, demo नैनो से होगा। नहीं नहीं, ये कमांड बताओ। मेरे को ये फाइल में जाना है, क्लाइंट info डॉट enc में, क्या डालूं कैट कर कमांड लीजिए बताओ। gedit यूज तो कर सकते हैं, vim यूज कर सकते हैं, cat से भी जा सकते हैं। वीम से ही जाते हैं, VIM, और ये फाइल का विम नाम डाल इंस्टॉल्ड देते है हैं। क्या, ये भी बात है उसमें क्या था? बाय ये है डिफॉल्ट विम, आता है। ओपन हो गया वीम। ठीक है, तो ये वाला फाइल डाल दे इसके अंदर, वो कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेव कैसे करोगे? और कॉलन डाल के w w फॉर राइट और q फॉर क्विट। इसके लास्ट में पहले जाना पड़ेगा हमें। यस, एट द एंड W टाइप कर दो, हो गया। तो इसके अंदर फाइल के अंदर जो है ये तुम्हारा, अब उसको चेक करना है हमें क्या हमने लिखा है। तो अभी इसका काम करो तुम लोग, और अब ये वाला कमांड चलाओ, ये जो बोला है ना यहाँ पे, I need that in the terminal enter ls command to verify the current, yeah that's done, the current directory, if not navigate the directory to the current info is stored, use the following command to decrypt the current info। अब ये कमांड चला सकते हो। उसके बाद डिक्रिप्ट वाला एक बार चेक करो रन कर रहा है नहीं। लेट्स सी। दैट्स ग्रेट, चलो हो गया। अब इसका पासवर्ड जो है ये वाला डाल दो, जो पासवर्ड दिया है ना, एंटर AES256, इसको टाइप ही कर देते हैं, डिक्रिप्शन पासवर्ड AES-256 CPC। इसको याद रखना, मेरे को बताना तुम लोग। AES हाइफन क्या वो था, पासवर्ड नहीं है 256। सर। तुम लोग का पासवर्ड यहाँ पे एक दिया है पासवर्ड ना। सिस्को 123 था सर। नहीं, एक मिनट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट फॉर डिक्रिप्शन पार्ट और यूज द पासवर्ड यू डिस्कवर। ओके ओके, हाँ हाँ, मैरी सिस्को से जो 123। डिस्कवर किए थे। हाँ हाँ, मैरी पीछे से जो हमारा डिस्कवर हुआ था, ये तुम्हारा अभी देखे सिस्को 123 था इसका, राइट, जो कि लैपटॉप BR में था ना। तुम लोग डाले थे पासवर्ड, कहाँ जाके पासवर्ड मिला था बताओ। व्हाट वाज द स्टेप दैट वी हैड फॉलो टू द पासवर्ड? सिर्फ पिछले ईमेल वाले पे आया था, बॉब का ईमेल पे। ईमेल सर्वर में ये वाला स्टेप को फॉलो कर सकते हो, पार्ट 5 स्टेप नंबर 1। तो ईमेल सर्वर में गए सर थे। वैसे लैपटॉप 2 का था सर। ये बॉब में आया था, लैपटॉप बॉब 2 का था सर। बॉब PC। एक मिनट रुको, इसका क्लोज मैं कर देता हूँ। बॉब PC में जाओ, मैरी ने डिस्क्रिप्शन की भेजा था, ये वाला पासवर्ड है सिस्को 123। यही पासवर्ड यहाँ डालना होगा। यहाँ पे एक लिख दिया था ऐसे, एंटर AES-256 CBC डिक्रिप्शन पर, ये इंफॉर्मेशन सही से नहीं दिया। ओके फाइन, डिक्रिप्शन पासवर्ड जो है ये तुम्हारा मिला है बॉब PC में, जिसने मैरी ने सेंड किया था ईमेल से, याद रखना। नाउ व्हाट यू विल टाइप, यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो फर्स्ट रिमेनिंग थिंग्स यू कैन रिमूव सिस्को 123 नाउ। Okay, what is next they're asking? That is fine.
Enter the ls command to see the new file has been added to directory and use the method you wish to open that kind of storage. ये तो हो गया. Let me connect once again. What is there something that's missing or what? सर वो ls client info डॉट txt ls बोल रहा हूँ सॉरी cat client info डॉट txt कर दिया. एक मिनट. अब देखो यहाँ पे ये तो ठीक है, ये तो कनेक्ट हो रहा है. अभी हमें एक लास्ट में जो बोल रहा है ना, एंटर एलएस कमांड टू सी द न्यू फाइल, ये तो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी. अभी मैंने तुम लोग को दिखाया भी था, एलएस डालोगे तो वो आ जाएगा. टीएक्सटी फाइल हमारा क्रिएट हुआ है, क्लाइंट इन्फो डॉट टीएक्सटी ईएनसी वाला क्रिएट किए थे हम लोग. और ये वाला फाइल एक है क्लाइंट इन्फो डॉट टीएक्सटी. ठीक है. अभी नेक्स्ट स्टेप जो बोल रहे हैं, इफ यू यूज द मेथड यू विश टू ओपन द क्लाइंट इनपुट टीएक्सटी फाइल टू सी द डिक्रिप्टेड कंटेंट. अच्छा, अभी तुमको इसको ओपन करना है, इस फाइल को. तो इसको ओपन करने के लिए कैट कमांड लगा दो. कैट क्लाइंट क्लाइंट इन्फो डॉट टीएक्सटी एंटर करो. ये तुम्हारा क्रेडिट कार्ड, देखो सारे इंफॉर्मेशन आ गए तुम्हारे. नेम आ गया, एड्रेस हो गया, क्रेडिट कार्ड का इंफॉर्मेशन इस फाइल के अंदर सब डिटेल्स हैं, ये तुम्हारे मिल गए. ये तुमको चेक करना था. डन. व्हाट हैपेंड, और समवन इज चैटिंग और व्हाट, कुछ पूछ रहे हो क्या तुम चैट में? आई एम नॉट सीन एनी मैसेजेस येट. यू कैन आस्क हियर डायरेक्टली. कुछ डाउट है क्या तुम लोग को? सर वो हाँ, स्क्रीन पे एक एलएससी वीएम नाम का, लैब वीएम नाम का कुछ लिखा है, वो कहाँ पे मिलता है सर? नहीं वो उसीलिए तो ये तुम लोग को अभी स्क्रीन पे मैंने क्या किया देखो, एक बार दिखा रहा हूँ. ये जो सर्च में गए थे हम लोग, WSL ओपन करो. तुम्हारे लैपटॉप में भी है, सारे किट लैपटॉप में जी है. सर, और मैं जस्ट ओपन करके रखा हूँ ऑलरेडी। हाँ, तो उसको ओपन करके उसके बाद क्या करना है देखो, यहाँ पे डाउनलोड एरो में जाना और यस ubuntu को ओपन कर दो. ubuntu मशीन को. ठीक है. ओके सर। ubuntu मशीन जब ओपन करेगा तो ऐसे तुम्हारा आईडी के साथ ही आएगा. और जो कमांड वहाँ पे बोल रहा है ना, उसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पर. ये कर दो, कॉपी करके इधर पेस्ट कर दो. ये वाला स्टार्टिंग से तुम लोग को करना था, यहाँ अच्छा, से जस्ट. वो जो सीएससी लैब वीएम है, ये वही है? यस सर। हाँ वही. और यहाँ पे कर सकते हो सीएससी लैब भी, मतलब लिनक्स वर्चुअल मशीन को बोल रहा है. तो लिनक्स वर्चुअल मशीन कोई भी यूज कर सकते, कोई भी डिस्ट्रो. ubuntu यूज कर सकता है, रेड हाट ले सकता है, अमेजोन का लिनक्स ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, काली लिनक्स भी यूज कर सकता है. ओके ये ओके सर। सबका कर्नल लिनक्स कर्नल ही, ubuntu भी लिनक्स कर्नल, सब ये लिनक्स कर्नल ही यूज करते हैं. ये अलग अलग Sure, डिस्ट्रीब्यूटर sir. है ये लिनक्स. Answer, sir, when you will be finishing? Yeah, just we have completed lab. We will finish in 1 minute. ओके. सो गाइज, वी हैव डन ऑलरेडी. हमारा स्कोर भी तुम लोग चेक कर सकते हो. ऐसे तुम अपना चेक करके स्कोर को क्लासरूम में अपलोड कर देना. अभी मैं ये क्लास वर्क क्रिएट करूँगा, तो तुम्हारा ये वाला स्क्रीनशॉट डालना है इस पर. यहाँ पे स्कोर दिखा रहे. कैन यू सी द स्क्रीन ऑन? कैन यू सी द स्क्रीन, राइट गाइज? राइट. Yes, हेलो. sir. यस Yes. या सो दैट स्क्रीनशॉट यू विल अपलोड इन द क्लास. ठीक है. अभी कंटिन्यू करो लिनक्स तुम लोग, और बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में. देखो लिनक्स का कितना यूज़ था आज, काफ़ी यूज है, इसलिए अच्छे से स्टडी करो लिनक्स तुम लोग. नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा. साइबर सिक्योरिटी भी समझ नहीं आएगा, क्लाउड भी नहीं समझ आएगा. हर जगह लिनक्स का यूज पड़ रहा है. तो यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस. ओके मैडम, यू कैन कंटिन्यू और वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. Many things guys, we'll see. I'll just create the classwork today and you can send. So, guys, let us start from the chapter number 6 that I have left. And just let me go for your, this is basically, this chapter number 6 is basically creating your local users and the groups. So, local users are basically when you are creating some users and then we are adding those users to the groups so that whatever policy we'll be putting on the groups, so that policy will be get implemented in the user itself. I'm hoping that screen is visible to all, right? Can anyone just confirm?
Yes, ma'am, visible. Okay. Yes, ma'am. So I'm directly checking with your guided exercise. The rest theory part you will be doing, and it is easy. If you go through it, simply read it and you can understand points. Now, next is when you're talking about this group IDs and GUID. So, how to get this information? So, this information is like if you put a command that is ID, then you will get the details of what is the group ID and user ID. Then, after you know this particular command that is PWD. Now, after that, if you want to check with the path of this particular home directory, then you will be using the command called echo dollar and the home. Similarly, if you want to check with the path directory where it is got created, so you can check with that one also. After that, you need to change from your from the non-admin mode to admin mode, so you need to switch the user. So you'll be doing the command called sudo su, then it will be asking for the password, and then you need to log in. I mean, need to switch. I mean, you should be landed to your root user. Then after you check again with your user ID and the group IDs, then here again check the details of your particular that this particular user is under home and home path. I mean, if you want to check with the path of this one, then also you can check with the thing. So basically, this particular guided exercise is nothing but you want to show that what is the difference between these two locations of these directories, and you can check with the GUID and all. So this was the main target of this one. Then after you need to log out from this root user to the non-admin user. So for that you need to write the command called as exit. Then after you check with all the operators that has been already created while you are creating at that point of time. I think you might have remembered the lab where you have created certain operators and then you have created some files and then you are giving the permission to that one, right? So in this one you'll be checking with that whether this sudo operator sudo, then you are changing this particular operator. Means from the student, you are changing to login into that particular user that is known as an operator. Then you can check it that it got changed. So previously, this particular operator is pre-built, already present. Okay, that is why you can switch this particular user. And then you are checking with the log messages, like you will be using the command called the tail and hyphen 5. So it shows that the log file that you are checking, that is message file, it should show you last 5 lines from the below. So these things you will be able to check it. So these are the things that you need to do, and then you are copying this particular content of one file to the another file, and then you are again checking it whether, like, see, as because you are there in the non-admin mode, so that is why it will be not work, that is why it will fail, right? Then after you need to use the command called as sudo. These things already we have talked about, right? Then you need to remove all these files and then you need to close this particular lab. So this is the end of this lab. Now then after we'll go for creation of your particular users, and there's your IDs. Now see here, if you want to add a particular user, for example, here you want to add a particular user, creating a particular user. So you should use a command called as a user add and the name of the particular user. Then after you are checking whether the user that you have created, is it got added or not. So you can check it, yes, it got added. So this how, in this way, you can recheck the things. Similarly, if you want to set any particular password to the newly created user, so you can create and you can set the passwords. Okay, similarly, he's creating few more users, that is operator 2 and operator 3, and simultaneously he is giving the password for both the operators. Okay, then after he is updating one type of one, you can say that one particular statement, that this is operator 1, this is operator 2. So these are the things that it has been set, and then again when you are checking with this particular file, you can check that it has been written like this. So previously it was showing only this way, like operator 1.
So he's changing that particular one type of statement, you can say it is one type of comment he is adding into that one. Instead of writing operator 2, so it will be showing that operator TWO in terms of alphabets. Okay, so this way it has done, right? Then after what he is doing, once he has created the users, now you need to learn that how to delete the users, right? So you should use the command called user delete. Then you need to give your option, then the name of the user that you want to delete. Then after again recheck whether this particular file do contain that user operator 3 or not. Now you can check it. No, this operator 3 is not present because it got deleted, it got accepted. Okay, then after you check whether this particular users are having some directories or not. Like if you are, it might have, if you have checked that when you are logging into your Windows, and that point of time what used to happen, your directory used to get created, the users directory. Similarly, it is saying that whether the users directory are present or not, name of that one. So you can just check it. Yes, it got created while you are creating the users. Okay, so this is basically the, again I told you it will be very easy chapter, right? So now let us go for this one. Now here we will be doing managing. Now see here again it will be interrelated with that one. Now here once you have created the your users before that, and now you are giving some group ID to the new group that you are creating. Like for example, you are adding a new group, so that is why you will be using a command called group add, name of the group that you want to create, and if you are providing a number, that UID, that is sorry, GID, that is a group ID, will be allocated to this one. Now think about, you have created another group, the name is admin. Okay, I can just check it. You have given here 30,000, so here it got assigned with 30,000 only. But here if you'll see, there is no GID has been provided, so it has taken a random number on that one. So similarly, when it is creating 3 users, like user mode means you are basically adding those users to the group, that is operators. Okay, so AG is basically adding the users to the group. The name of the group is this one, and the name of the user that you want to add. Then after, if you want to check with the IDs of the operator 1, you need to give this particular command. Similarly, second and third, then you can get the details of these IDs, that is GUID and your group ID. Next, after you are creating some other users, and simultaneously you are adding them to a group called as admin. Okay, so similarly at one go also you can do this. Then after again checking this particular IDs and all, then again you are checking this particular details, whether these groups that you have created, that is the operator 1, 2, 3 and admin, sysadmin 1, 2 and 3 that you have created, is present in the group file or not. So you can just check it and get these details here. It is already present. Okay, so in this way you need to do. Then after, you are creating some kind of administrative privileges. Privileges means there are basically 3 privileges: read, write and execute. In the upcoming chapter we'll be going in detail about these things. Okay, so now only just understand all the privileges you are providing to the group. That group is admin group. Okay, then you are doing what? You are basically switching to the one more user that is known as sysadmin, and then you can just check it, it got landed to the sysadmin. And then again you are using giving some passwords and all. So this is the basically work of this particular guided exercise. I hope that you guys are understanding. I know that I'm going little fast, but I'm hoping also that you guys are recording these sessions, and once you listen it carefully you can understand it. Okay, now let us move to the here.
This is basically your password setting, okay? So this one is again very much easy. You need to set the passwords, and like if you want to give a number of days, okay, so maximum number of days you can provide is basically 90 days. After that, it will be again ask you to change the password. So these are the things that you will be doing. You just do this particular one by your own, because this is again a self-based exercises there that you should be done by you only. Now let us move to the chapter number 7, that is your control access to the file. So let me give you a little bit idea upon this one, then a little bit theory. Is this whiteboard is visible to all? Yes, ma'am. So when we basically give these controls, and when we are talking about this particular chapter, so we should have a normal idea that we need to know about ACL, that is known as access control list. So when you are doing this, so you need to remember this words. This is read, write, execute. So read do have a value called 4, write do have a value called 2, execute do have a value called as 1. And similarly, there are certain operators are there. Operators are there, that is plus and minus. Plus is basically grant permission, and this one is revoke the permission, right? And we do have a certain one command. The name of the command is known as chmod. Okay. Now, for example, I do have a file called as f1. Now, if I want that f1, in f1, I should have, okay, one more thing that I left, that is, we do have another things like UGO, that is known as user, group, and other. Okay. Now, when I want to give, suppose, like 4, 5, and 0, suppose I have given. So the first number is basically dedicated to the user. Then this is the group, and this is for the others, right? So 4 means, now for the users who will be using this particular file called as F1, they will be having the permission called as a read permission. Now the group will be having, it's having 5, value is 5, so it will be having read plus execute. Now the others does not have any particular permission, because it is having 0. 0 means nothing is get allocated. Like the total of 4 plus 2 plus 1 is basically 7. Okay, so this is basically the alphabetic way of doing the things. Another one is basically when we will be going for, like for example, if I want chmod G plus WX, suppose I have given, this is again one more approach. So it means that what? To the group, it has been assigned with the permission that is read and execute. Similarly, if you want that, if I want all, like user, group, and other, all should have all the permission. So I should use RWX and the name of the file or the directory that you want to give the permission. Now, if I want that, I don't want that the group and other should not have the right permission. So what you will be doing, that is chmod and G minus type others like G and O minus W, and the name of the file is F1. Clear? So in this way you will be working with this one. So this particular chapter is like that only. So let us see. Sure. Now let us go for this one. Now suppose here what it has done, what it has creating that one particular directory, that is consultant, and he's giving the permission that is known as consultants
the owner of this particular directory should be whom? Consultants. So in this way, he has given the ownership. So ch own is basically giving the ownership of particular file or directory. Okay. Then after, if you'll check with that particular directory, that who is the owner of this particular directory, now you can see that consultants is basically the owner of the directory called as consultants. Similarly, if you want to give a certain permission, like for example, you can just check it. He has is using with group to write. You can see that it is a pair of 3. First pair is for user. Next 3 is a pair of group. Next 3 is should be a pair of others. Okay. And he want to give a permission that group should have a write permission. Previously, if you can see, there is no write permission is there. You can just check it here. The permission has been given to the groups. Clear? In this way, you can work from that one. And in the numerical form also, you can just provide. Like for example, here it is giving that the other should not have any permission. So you can just check it. It has been, it is not been allocated with this one. So this is the way that you will be working with this particular lab. Okay. Clear? So in this way, it should be work. Yes. Similarly, managing the default permission and file access. Switching the user, then you will be checking the unmasked value. The same way you will be go through it, check it. Again, changing the ownership of this particular file. That file is operators, and checking whether this particular ownership of this file has been allocated or not. You can just check it with this one, and this is how it will be working, like ch mode and then touch. Then you will just work with that one also. Okay, it's very small and you can go through it. Now next is monitoring and managing the Linux file. If you see this chapter number 8, 9 and 10 is mostly interrelated with each other, right? Now, when you're dealing with this monitoring of and controlling the processes and all, we are basically talking about the tasks and all. Okay. These are basically the tasks and all. So whenever whatever the task or processes is there, so it should work in the CPU, right? So what you are doing? Like again, you need to create a directory, then you check with the file. This particular file should have this particular script should be there, and then again you need to check with you need to execute it. I'm hoping that you guys are knowing with this one, right? When you are executing this particular scripting file, so you need to use the command called chmod. Then you need to give a permission that is +x, that is executing. That is what we have right now. We have studied, right? RWX. So similarly here you need to provide the permission that is known as executing. Okay. Then after you need to check with all the details. Then jobs. When you are using for this job, so jobs will be showing you the lists of tasks or the processes that is running. Like for example, there is a task that right now was running is your control technical. It is on stop. Now, if you want to make it like running, so you need to make it on background. So for that, BG you will be putting. Then after again you are checking, when you are checking with the status of this particular task, so you can check it, it is right now running. So in this way you need to work upon that, right? Then after, if you want to check with the your database, what are the different processes are there, then if you will check with what is the PID and all, you can just work in that one, and you can just check if there are 3 basic processes are running or the task. So it is basically in run mode. Now, if you want to just suspend, it means that if you want to stop, so you can just check it. If you'll be using FG, that is foreground, and %1, then you can just check it, it got stopped. And again, when you are checking for the jobs, the number 1, which was previously running, it got stopped right now. So in this way, you can just play with that. Similarly, FG2, so it will be again stopped. Now, after that, if you'll again check with that one, then you can check that the F2 is got
stopped. So in this way, you just work with this. So these are nothing but only few commands are there. Go through it and complete this lab also. And if we'll go for the chapter number 9 also, the same thing, little bit changes will be there. This is again control services and demand processes. So in this way, let me go with this. Okay. Now here basically we'll be dealing about the system processes. If you'll check with whatever the services that is running or not, like for example, if you'll go for your process manager in case of your Windows, so there also you can see the whatever the processes are running, CPU utilization, the process, whether it is active, and like in that way. Here you will be using this command to check with whatever the processes are running and all. Okay. So go through it up to complete it up to chapter number 9, and then after in the next session, tomorrow is 4th. On the 4th day, I will be taking a session for 10th, and then mostly 11, 12, 13, 14, and 15 are your set-based chapters. But then also I'll give you an overall idea, and then we'll be closing this particular course. Okay. And those people who are not been able to enrolled into that particular portal due to the updates and all. So once the portal will get updated, then after you will getting the access. So even if this training will be get finished on 5th of this month, then after you will be have the access and complete it so that you will get the certificate. 5th के बाद ही उन लोग को कोर्स एक्सेस मिलेगा जो लोग पोर्टल को एक्सेस नहीं कर पाए हैं. Clear to all? Is it clear to all? Yes. Okay. Okay, then guys, we'll meet again not tomorrow, day after tomorrow. Okay? So bye bye to all. Ma'am, And see you again. Yes. Excuse me, ma'am. actually, Yeah. I was trying to do the lab. After I created it and tried to do the lab, open the workstation, doing open console from the workstation. It's not working. It's showing connection error and something. Because I of some tried. internet issues, it is you are facing M- this. Ma'am, Because your internet should be same very error good, then is only it coming will from go. me. I've been trying for past Same 3 days also. solution from my side also. Same feedback that what I have given to her. Internet issues. O- Because every time it's work good with me. And if you guys are facing this issue, so internet issues or some fluctuations. So it requires very high speed internet. Otherwise, it cannot be get connected with the server. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Okay, then guys, we'll meet again like on 4th of like today is Wednesday. Friday we'll meet and we'll finish all the things. Ma'am, just Okay one then, thing. yes. By when we should complete our course on Red Hat? What? What? By when we should complete our course on Red Hat? Just checking your mail. The end date is already mentioned. Read it properly. Okay then guys, we'll meet on your Friday. Okay, so today is Wednesday. We'll take your session on Friday. So I'm giving 1 day for completing the task.